Okay, today we will read chapter number 33. So, practical hints. During the course of treatment, the patient may develop early signs of suppression from one miasm to another. It is imperative for every physician to know this because we will realize it only if we have knowledge of it. During the treatment of a recurrent tendency to cough and cold, may children develop minute pin headache like white spot, pin head like white spot. Yes. So this is the hint of suppression of miasm from sora to syphilis. तो इस तरह के छोटे छोटे हिंट्स हमें फॉलोअप्स में मिलते हैं. इसीलिए फॉलोअप्स आर द मिरर ऑफ आवर सक्सेस. तो हम उस फॉलोअप्स में ही देख सकते हैं कि कहाँ किस तरफ हम जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसी हो रही है ना, वी आर ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग. तो हर फॉलोअप हमें डिटेल में लेना चाहिए. माइन्यूट से माइन्यूट कंप्लेंट के लिए हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि बिफोर क्या था, अभी आफ्टर क्या है. यस, तो क्या चेंजेस आए हैं, है ना. सिम्टम्स में जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स में क्या चेंजेस आए हैं. देन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ दिख रहे हैं क्या, माइंड लेवल पे क्या चेंजेस है, जब फर्स्ट विजिट में कौन से मायाजम के सिम्टम्स थे, नाउ जो सिम्टम्स अभी हमें फॉलोअप्स में मिले हैं वो कौन से मायाजम से, है ना. अगर फर्स्ट टाइम आया जब सोरा था, प्योर सोरिक सिम्टम थे, नाउ सम सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स आर appearing on the skin or in the body, then it is surely the suppression. तो ऐसे केस में हमें अलर्ट होना चाहिए कि वी आर गोइंग रॉन्ग. सो फर्स्ट स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड अगेन take the rehistory and afterward प्रॉपरली हमें रेपर्टाइज करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है. सो दिस इज द सिंपल माइन्यूट हिंट. अगर सप्रेशन ऑफ रिकरेंट कोराइजा होता है और पिन पॉइंट व्हाइट स्पॉट पेशेंट के स्किन पे आते तो इट इज रॉन्ग. यस, सो व्हाइट स्पॉट, व्हाइट discoloration on skin is always wrong. This is a wrong direction even if the cold is better. Yes. So this indicates suppression from sora to syphilis. अब कुछ फिजिशियंस, कुछ डॉक्टर्स इसमें ऐसा भी करते हैं कि जो पिन पॉइंट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ऑन स्किन, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली डिस्टर्बेंसेस इन न्यूट्रिशनल or food, because of some vitamins or any electrolytes imbalance अगर होता है तो पिन पॉइंट स्पॉट स्किन पे आते हैं. बहुत डॉक्टर्स इस तरह से बोलते हैं कि ये बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी हो रहा है, लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानिन. एंड जहां कहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओनली डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ओनली फंक्शनल डिसफंक्शन की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो देन इट इज रॉन्ग. इट इज श्योर शॉर्ट साइन ऑफ सप्रेशन. इसीलिए दो इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल इनसफिशियंसी और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फिर भी वो रॉन्ग है. क्योंकि न्यूट्रिशनल अगर प्रॉब्लम है या फिर न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस हो रहा है, न्यूट्रिशनल प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से अगर आ रहा है तो वो सोरा होगा. लेकिन वहाँ जो रिएक्शन बॉडी से मिल रही, जो माइस्मेटिक रिफ्लेक्शन बॉडी पे आ रहे, वो रॉन्ग है. दैट्स व्हाई इट इज
suppression. So this indicates suppression from psora to syphilis. This indicates that the sorry. So this indicates suppression from psora to syphilis. This indicates that the constitution is predominantly syphilitic. तो हमें समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हम जिससे डील कर रहे हैं दैट इज द सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर हमारा थोड़ा सा भी मेडिसिन के लिए पार्शियल सिमिलिम हो जाता है या फिर थोड़ा सा भी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स होता है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है, तो इट अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिफिलिटिक है, डिस्पोजिंग माइजम पेशेंट के अंदर सिफिलिटिक है, तो फास्ट वहां पे सिफिलिटिक ग्रोथ हो सकती है। यस, डिजीज सिफिलिटिक वहां पे हो सकता है। सो सेकंड कंडीशन, सेकंड हिंट, इफ cough and cold tendency disappear and child start putting on excessive weight with lethargy, indicates that wrong direction, not proceeding towards cure. Yes, cough and cold, if gets suppressed, that means sora is getting suppressed, and that child is putting on weight, becoming healthy, becoming stout, obese, this is wrong, है ना, डलनेस आना शुरू हो गया मेंटली, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज सोरा इज सप्रेसिंग एंड साइकोसिस इज स्टार्ट. Sora to psychosis. So suppression from Sora to psychosis. Third hint, the patient may start putting on excess weight and become obese after tonsils operation. Yes, the patient start putting on excess weight after tonsillitis or tonsil operation, appendix operation, then hysterectomy. This is again wrong. Yes, after treatment of acute infectious disease, for example typhoid, malaria, hepatitis, pneumonia, these are all soric disease. So here disease suppressed from sora to psychosis. All these indicate suppression from sora to psychosis. So children start becoming dull and losing interest in study is again the wrong direction, indicates onset of psychosis. When tumors or fibroids are on the way to cure, extravasation in the skin occurs in the form of ringworm, tinea versicolor, viral rash. So it is good or bad? Tumors or fibroids are on way to cure, and extravasation in the skin occurs in the form of ringworm. Good or bad? Yes, बोलिए, good or bad? Both are psychosis. Tumor psychosis, ringworm is psychosis. सप्रेशन है सर. Yes, suppression है. कैसे? सेम स्टेज में सप्रेशन हो रहा है साइकोसिस में. बट ट्यूमर गया और रिंगवर्म ऑन स्किन आया, तो सपरेशन कैसे? रिंगवर्म आया ना सर. हाँ, जनरल इरप्शंस ठीक थे, लेकिन रिंगवर्म भी साइकोसिस ही है ना. यस सर. सोरा आना चाहिए. इंटरनल गया और एक्सटर्नल एक्सट्राइजेशन ऑन स्किन आया, साइकोसिस टू साइकोसिस ही है ना. बट ऐसे कंडीशन में क्योंकि रिंगवर्म्स है, इट इज पैरासाइट, वॉच करना है. अगर
वो बढ़ती जाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ कुछ करते हैं और बाद में ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वेट एंड वॉच। अगर वो कुछ दिन रह के अपने आप कम हो जाता है तो इट इज वेल एंड गुड, सो वेट एंड वॉच। देन सडन ऑनसेट excruciating headaches, mimicking meningitis, or sudden behavioral changes in young hysterical children, which are diagnosed as space occupying lesions, may be due to local application on cracks or eruptions on lips a week before. These patients are admitted to hospital and generally diagnosed as tubercular meningitis, etc. There is a suppression of psychosis, syphilis on the skin to neuroectoderm. These emergencies can be cured by homeopaths within 24 to 48 hours with right minimum, which brings back the eruption on the lips. Yes. Then sudden suppression of any discharges leading to excruciating pain anywhere in the body is metastasis of toxins. Yes, these pains can be easily cured with abrotenum 201 or at the most two doses if not much time has lapsed. Yes. Abrotenum, it is a very good remedy for suppressed discharges. Suppressed discharges, yes. एक केस मैं आपको एब्रोटेनम की बताता हूँ। एक ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज मैन हैविंग लूज मोशंस, और लूज मोशन के बाद लूज मोशंस कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट से स्टॉप हो गई और लूज मोशन के बाद पेशेंट गोज इनटू कोमा आफ्टर 3 to 5 days के बाद पेशेंट स्लोली डल होते गया, एंड डल होने के बाद ही गोज इनटू कोमा, एंड simple single one dose of abrotinum 200 patient come out from coma because of only one rubric, that is discharges suppress and unconsciousness after discharges suppress, stool suppress. Yes, so this is the best result of abrotinum, जो सिंगल डोज से पेशेंट 24 आवर्स में के अंदर ही पेशेंट कोमा से बाहर आया। बहुत ही अच्छी रेमेडी है abrotinum. If any patient comes with acute onset of toothache, again ये टूथेक जो है ये बहुत ही इरिटेटिंग डिजीज है हमारे लिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, और हर बार वो कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स लेंगे, पेन किलर्स लेंगे, क्योंकि टूथेक का पेन न्यूरालजिक पेन होता है, इसलिए वो बियर ही नहीं कर पाते, एंड जो क्रॉनिक डिजीज के लिए ट्रीटमेंट शुरू होती है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, और न्यू सिम्टम्स, मतलब जो पुराने ओल्ड सिम्टम्स है वो अपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो टूथेक इट इज अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल इन ट्रीटिंग द क्रॉनिक डिजीजेस। So was it cold, coryza, loose motions, or chest inflammation of throat? Even if such a history is not available properly, inflammation or discharge, and available properly, one can safely presume the history of suppressed inflammation or discharges, and abrotenum will create a miracle. Yes. तो सप्रेस डिस्चार्जेस, सप्रेस टूथेक, सप्रेस लूज मोशन, सप्रेस डायरिया, afterward the severe complaint like coma, dullness, so abrotonum will cure this condition. Yes, so abrotonum is one of the most neglected miraculous remedy
which can give credit to homeopaths in treating emergencies. Even old people going into drowsiness or confusional state after suppression of knee pain or knee joint pain to backache, to neck pains, yes, to stuporous condition will be cured of such cerebral condition with abrotinum, sometimes repeatedly. The repetition is advocated because of two reasons. Firstly, the vitality of such drowsy patient is low, and secondly, abrotinum here is the a partial simillimum to state of metastasis from sora to psychosis, that is inflammation to stasis. It is used to bring the toxins that have traveled higher to more important tissue back to less important organs. Yes. So abrotinum आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. Yes, abrotinum. It is a neglected remedy, but very much important remedy of our remedy. एनी डिस्चार्ज सप्रेस, नेजल डिस्चार्ज, कोल्ड कोराइजर सप्रेस हुआ, उसके बाद निमोनिया हुआ, देन कोल्ड कोराइजर सप्रेस हुआ, देन डायरिया हुआ, या फिर अमेबिक डिसेंट्री हुई, तो एब्रोटिना. Inflammatory tendencies before they turn into induration are volatile. We observe in many patients that they suffer from headaches for many years, almost say 20 years. Then at the age of 40 years, these headaches, which were paroxysmal, become more permanent. Gradually, headaches are accompanied by visual disturbances or memory lapses or blackouts. Yes, blackouts. Now the patient is investigated and scanned and is found to be suffering from tumor. It could be astrocytoma, meningioma, glioma, etc. What is interesting is that if the headaches were present for many years, then was this tumor also present for so many years? Except for slow growing tumors, this is not possible. This means the growth or tumor is a recent development, and it can be traced back to the point when the headaches, which were paroxysmal, become continuous. This was the transition from sora to psychosis. Before this point, the headaches were due to inflammation or congestion of tissues. After this, the inflammations got converted into chronic state and induration and growth started. So sora gets suppressed and psychosis start. So this is true of all the tumors. This is a time when the disease is in a labile state, deciding to invade a new territory. At this time, symptoms are paroxysmal, coming and going. Once it decides to settle down in the new tissue, the symptoms become permanent, and this is psychosis. सोरिक थे जब वहां पे ट्रांजिएंटनेस था, सिम्टम्स आते थे, पेन आता था, जाता था. नाउ अभी वो परमानेंट होते जा रहा, मतलब सेटल हुआ है. दैट इज द साइकोसिस इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर. So significance of this understanding for a homeopath is that the long as as long as the disease is threatening to invade or is in a labile state, the causative factor is important. In acute condition, the causative factor is important. Once the disease has settled down, that is inflammatory stage is gone, completely gone, and thickening or growth is set in, the rubric elements from does not bear importance. अभी यहाँ पे हमें genetic dispositions लेने पड़ेंगे, right? So very often girls suffering from vitiligo or leukoderma are seen to be developing boyish or mannish habits. Yes, this is because the MSH, melanocyte stimulating hormone, is synthesized inside the pituitary from the neurons,
which are quite in close proximity to the ones which synthesize the prolactin and luteinizing hormone. This female hormone control the ovarian hormones and thus control the feminism. Yes. So menses becoming irregular during the course of vitiligo treatment, amorous to suppression or wrong direction of cure. So it is sure shot suppression. Though it is vitiligo is a syphilitic disease, but it is a fifth layer disease, and again it goes into the interior of that. So fifth layer organs, that is hormones, get suppressed, and that lady, that angle becoming mannish because of the hormone suppress. Yes, फेमिनाइन हार्मोन्स यहाँ सप्रेस हुए. अब यहाँ पे सप्रेशन कहाँ से कहाँ गया, तो सुपरफिशियल, दैट इज स्किन expression on the skin gets suppressed, goes into the deep hormonal level. Yes. So the destructive tendency, syphilitic, which is disturbing MSH production of if suppressed, disturb the feminine hormone production, and the patient start feeling the behaving like a boy, like boys clothes, hates girls clothes, ornaments, lipstick, etc. Feminine hormone production, the patient start feeling and behaving like a boy, and in a young girl, menarche is delayed. Homosexuality is worst stage which follows. Yes, so it is again a strong syphilitic homosexuality. In such cases, cure should not start from disappearance of leukoderma or leukodermal spot, but from the change of mental attitude. The girl should start liking girls' clothes, girlish toys, feminine ornament, start feeling like a female, the role for which she is born. Yes, and then only then should physical improvement in white spot start, and that too from above downward. So ऐसे केसेस में अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो ये बहुत अच्छा हिंट्स है सर ने यहाँ दिया है कि ऐसे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले जो नेचुरल प्रोसेस है, दैट इज द मेंसेस शुड गेट रेगुलर और स्टार्ट. उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेंगी उसके विटिलिगो स्पॉट में. यस, देन आपको बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे, है ना. पहले जो गर्ल बॉयज जैसा लाइक्स करती थी, बॉयज के जैसा रहती थी, बॉयज के जैसे कपड़े पहनना, नाउ अगर रेमेडी राइट है, आपका एनालिसिस राइट है, तो नेक्स्ट 2-3 फॉलोअप में ही पेशेंट गर्ल बन के आएगी. यस, मतलब जो बॉयज हैबिट्स थे वो आपको कम होते हुए दिखेंगे. सो दिस इज द improvement at mental and hormonal level. Now the 10th hint is dangers of MRI scanning. What are the dangers of MRI scanning? There was a fast growing astrocytoma, which was, ये सर ने यहाँ पे केस दिए, एस्ट्रोसाइटोमा की केस है, और उस केस में पेशेंट पूरा हिल हो गया. उसके बाद वापस केस रिवर्स हो जाती है because of MRI scanning. So MRI, there was a fast growing of astrocytoma which was operated and grew again. When the case was seen by me, she was in intensive care of Jeslock Hospital, lying unconscious. She was chilly since young age, very reserved, introverted, much responsible, religious, conscientious, diligent to the extent of working in the kitchen. Even with severe headaches and giddiness,
Before she was hospitalized, she used to suffer from sun headaches off and on since childhood with increased thirst and desire for bread. On the above basis, she was prescribed natrium carb 30 single dose. She became conscious, was brought home and started walking, talking, and finally dancing too. She went on to get her investigated on her own interest. सर ने बोला नहीं था कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन पेशेंट की देखो एक्साइटमेंट कि डॉक्टर को दिखाने के लिए सरप्राइजिंग रिपोर्ट करवा लेते हैं ना। तो बहुत से पेशेंट होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन खुद ही करते हैं, खुद ही खुद के इंटरेस्ट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें रहा नहीं जाता, कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि पेशेंट एस्ट्रोसाइटोमा का बहुत ही अच्छी तरह से क्योर हो रहा था, पेशेंट कोमा से बाहर आया, है ना। पेशेंट को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, पेशेंट घर पे गया, उठना बैठना खाना पीना घूमना इवन डांसिंग पेशेंट का स्टार्ट हुआ, मतलब ही इज ऑन कंप्लीट क्योर, ऑन द वे ऑफ कंप्लीट क्योर। और ऐसे इसमें क्या ट्विस्ट हुआ, शी वेंट ऑन टू गेट हर इन्वेस्टिगेशन by her own interest, and against my advice and to everybody surprise, the MRI showed complete regression of tumor. They were happy but I was apprehensive. जब सर को बोला कि हमने एमआरआई किया तो सर बिकम नर्वस, अरे अब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। माई वर्स्ट फियर केम ट्रू एज सी डेवलप गिडीनेस आफ्टर 3 days। MRI done with 3 weeks showed regrowth of tumor, reversal of symptom, है ना, the disease reverse। She became unconscious and died in about 6 weeks time। Preparation of natrum का changing the potency, not changing of remedy, sorry, repetition of natrum का changing the potency, not changing of remedy helper। बाद में नेट्रम कार्ब ने काम ही नहीं किया। द क्वेश्चन इज व्हाट हैपन एंड व्हाई दिस हैपन। तो ये ऐसा ही होता है, जो सीरियस सिवियर कंडीशन के, रिवर्सिबल डिजीज के, डीप पैथोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनकी जो सेंसिटिविटी होती है सिपिलिटिक सेंसिटिविटी है, सैगरेट सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि ये सिपिलिटिक कंडीशन में होते हैं और वहां से ये जब सोरा में आते हैं तो सोरा से वापस वो सिपिलिटिक में फास्ट कन्वर्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पेशेंट कभी भी जा सकता है। इस बहुत ही अच्छी केस सर ने यहाँ दी है। वैसे ही एक केस मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कोमा का ही पेशेंट था, ओल्ड एज मेल पेशेंट था, जो पेशेंट आफ्टर फीवर, मतलब फीवर कुछ दिन उसे फीवर चला, फीवर के बाद पेशेंट कोमा में चला गया, मेनिंजाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस के बाद पेशेंट कोमा में गया। पेशेंट कोमा में जाने के बाद पेशेंट वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट डॉक्टर सेज नो होप, सो वाज डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज लेने के बाद पेशेंट वाज फ्रॉम रूरल एरिया, तो वो उनके विलेज जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने सोचा कि भाई एक बार दिखा देते हैं, तो वो पेशेंट एम्बुलेंस में ही मेरे क्लिनिक लेके आए। मैंने एम्बुलेंस में ही पेशेंट को देखा और जो हिस्ट्री लेने की थी वो हिस्ट्री ली है। हिस्ट्री लेने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी प्रॉपर हिस्ट्री मिली, प्रॉपर रूब्रिक्स मिले, और पेशेंट को मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और उनको बोला कि अगर यहाँ आपकी कुछ अरेंजमेंट है तो आप पेशेंट को रुकाओ, पेशेंट 2 दिन में कोमा से बाहर हो जाएगा। तो उन्होंने
कहा कि हमारा तो कोई यहाँ पे रहने का ये नहीं है, तो अगर आपका कुछ होगा हॉस्पिटल का तो आप इन्हें एडमिट करवा लो। मैंने पेशेंट को एडमिट किया और एडमिट करने के बाद मेडिसिन अप्लाई किया ऑन द फोरहेड। और पेशेंट नियर अबाउट 1 PM के आसपास पेशेंट मेरे पास आया था। पेशेंट 1 डेढ़ घंटे बाद पेशेंट को जब मैंने मेडिसिन अप्लाई किया और जब मैं शाम को पेशेंट देखने आया 6 बजे, तो ही वॉज ओपनिंग द आईज एंड रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। सो वो इतना वंडरफुल और सरप्राइजिंग था सभी रिलेटिव्स के लिए पेशेंट के, क्योंकि वो घर पे लेके जा रहे थे तो पेशेंट के साथ काफी रिलेटिव्स थे। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि देखो 2-3 घंटे में मेडिसिन इतना वर्क कर सकती है, इतना फास्ट वर्क कर सकती है, और ये एज में। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट कंप्लीटली बिकम कॉन्शियस। फिर 2-3 दिन पेशेंट हॉस्पिटल रहा, क्योंकि उसके बाद पेशेंट को फीवर रिटर्न आया। और फीवर आने के बाद फिर कुछ इरप्शंस स्किन पे आए थे, इसलिए पेशेंट को रुकाया था कि घर पे जाने के बाद कुछ ना करे। कुछ गड़बड़ की तो वापस वही कंडीशन हो सकती है, और तब कोई चांस नहीं थी। इसीलिए उनको बोला कि मुझे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना, कुछ लगाना नहीं, कुछ देना नहीं। वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे। फिर 6-7 दिन निकल गए थे, तो वातावरण तर बघा. खूप छान आहे। पाऊस बरं लवकरच जाते. तो जब मैंने सोचा कि अपन अब कल मैं उसे डिस्चार्ज दे दूंगा, तो पेशेंट का जो साथ में जो था वो पेशेंट का बड़ा लड़का था। तो उसने सोचा कि कल हमें डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो पापा को बहुत खुशी खुशी एक्साइटमेंट में गांव में लेके जाएंगे, चलते हुए लेके जाएंगे। सब लोग आश्चर्य करेंगे कि वाह, पेशेंट कोमा में गया था और कोमा कंडीशन में पेशेंट को डिस्चार्ज दिया था हॉस्पिटल से। तो सबको दिखाएंगे कि कितना अच्छा हुआ पेशेंट, होम्योपैथी से पेशेंट अच्छा हुआ। इसलिए वो इतना एक्साइट था बहुत। और नेक्स्ट डे जाने का था, इसलिए उसने सुबह सुबह मॉर्निंग में पेशेंट को फोम आता ना, सेविंग का फोम लगाया और पेशेंट की सेविंग की, पेशेंट का शेव किया। और शेव करने के बाद पेशेंट उठ के बैठा, बढ़िया घुमा इधर उधर हॉस्पिटल में, बहुत खुश थे दोनों भी। फिर जब मैं 12 बजे राउंड पे गया, राउंड पेशेंट को देखा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि पेशेंट इतना फ्रेश और इतना बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मैंने बोला आज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, घर पे जाना है इसलिए। हाँ बोले, बहुत एक्साइट थे। तो मैंने बोला ठीक है, 2-3 बजे तक रुको, फिर आपको डिस्चार्ज दे देता हूँ। 3 बजे तक राउंड के बाद पेशेंट को थोड़ा सा डलनेस स्टार्ट हो गया, फीवर आया, डलनेस, पेशेंट डल हो गया। 3-4 बजे पेशेंट एकदम बहुत ही डल हो गया। तो जब मैं ओपीडी फिनिश करके पेशेंट को देखा, तो पेशेंट मुझे काफी डल दिखा। मैंने बोला क्या हुआ? तो पेशेंट का लड़का भी कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, बोले फीवर आया और अचानक ये डल हो गए, आज इन्होंने लिया भी नहीं ओरली कुछ। तो धीरे धीरे शाम तक पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस हुआ, और मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पेशेंट गोज इनटू फुल डीप कोमा, एंड टेम्परेचर वाज 1314 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली सेव क्रीम, जो फोम की आती थी, जब नई नई आती थी वो
नया नया ही स्टार्ट हो गया था फोन। तो सिंपल थिंग्स, क्योंकि पेशेंट ऐसे कंडीशन में बहुत ही सेंसिटिव होता है, और ऐसे सेंसिटिविटी, दैट सेंसिटिविटी इज सिपिलिटिक सेंसिटिव, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट सोरा से सिपिलिटिक में फास्ट कन्वर्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन पे हमें बहुत ही मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना चाहिए, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक पेशेंट को रिवर्स कर सकती है। तो पूरी मेहनत पानी में जा सकती है। पेशेंट इतना अच्छा हो गया था, वापस पेशेंट कोमा में चला गया, उसके बाद पेशेंट बाहर आया ही नहीं। दैट वाज लास्ट। यस। सो इस केस पर से ये मुझे याद आया, बहुत अच्छी केस थी, और वो केस मैंने नक्स ओमिका 200 से निकाली थी बाहर, और उसके बाद वापस वो 3-4 दिन के लिए, पेशेंट 8 दिन के लिए बाहर आया, वापस चले गए। Yes. The answer is simple. MRI had caused the regrowth, but can a non-invasive technique of MRI cause tumors? ऐसा अगर सोचेंगे तो सब जने हंसेंगे। ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक ऑफ एमआरआई, एमआरआई के रेस से ट्यूमर फॉर्म हो सकता है? नो, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे वो जो प्रोसेस थी क्यूरिंग की, जो वाइटल फोर्स वहां पे स्टिमुलेट हुआ था, वो वहां पे डबल स्टिमुलेशन की वजह से वीक बन गया, और डिजीज फोर्स इतना था कि उसे वापस regrowth कर दिया। Yes. So MRI is made of a mode of investigation in which the human being is placed in the strong artificial magnetic field. The cells and the tissues are influenced by this strong field in such a manner that the magnetizable elements inside the cells are aligned in a certain manner. When the magnetism is stopped, the elements start realigning themselves in their natural place. This process is picturized to find the existence of tumor and destruction. Yes, this aligning and realigning of internal elements of cells and tissues amounts to injure. Yes, even even Hahnemann mentions in aphorism 73. He mentions about meteoric or telluric influences, which are essentially strong magnetic influences, bring injurious to the cells and hence exciting cause. Meteoric and telluric, हैनेमन ने 73 एफोरिज्म में लिखा है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड cause injury to the cell, right? So he has mentioned them only in acute disease, meaning those which are burst of latent sora. इतना सोरा वहां पे स्ट्रांग होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, दैट इज द exaggerated. So for us, sora amounts to inflammatory tendency, and that is physiological, and we understand by now that strong psychosis constitution goes to the second defense, that is constructive defense, immediately and quickly. In this case too, the cells of nerve astrocytes, which were limping back to normalcy, were coming back from psychosis to sora. At this stage, the cells astrocytes are very sensitive to slightest irritation. MRI irritation was enough to injure and produce the constructive defense, which was genetically inherent in this constitution. Yes. This lead to growth of the tumor again. मतलब साइकोसिस से, सिपिलिटिक से हमने पेशेंट को सोरा पे लाया, लेकिन वहां पे सिपिलिटिक और साइकोटिक कंडीशन बहुत, मतलब साइकोटिक मायाज्म पेशेंट में बहुत ज्यादा
इनहेरिटेड होने की वजह से, बहुत स्ट्रांग होने की वजह से, उसका इन्फ्लुएंस बहुत हाई होने की वजह से पेशेंट सोरा में लाने के बाद भी कभी भी रिवर्स हो सकता है, ओनली माइन्यूट स्टिमुलेशन से। इसीलिए कोई मिस्टेक नहीं, कोई रॉन्ग उस पीरियड में होना नहीं चाहिए। यस, so this cannot happen in all cases exposed to MRI। यस, ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता। अब बहुत से लोग सेव करते हैं फोम से, लेकिन सभी को ऐसा नहीं होता है। सभी लोग उससे सेंसिटिव नहीं होते, उतनी इंटेंसिटी में सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर कॉन्स्टिट्यूशन पे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी चीज को कितना सेंसिटिव है। अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो ऐसे चीजों में हमें बचना ही चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओनली प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। हर चीज में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट को ये चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि जब तक पेशेंट यहाँ से जाता नहीं, पूरा क्योर होता नहीं, तब तक हमें पूछे बगैर कुछ करना नहीं। सो this cannot happen in all cases exposed to MRI. Only those constitutions who are oversensitive, like natrum carb, nux, these are very sensitive drugs, run the risk. It is best not to do a repeat investigation if the patient shows such a drastic, unimaginable improvement. Investigation at this stage does not serve any constructive purpose. Yes. कभी आपने रिकॉर्ड के हिसाब से भी अगर इन पेशेंट को, जैसे नक्सोमिका नेट्रम का पेशेंट को बोला कि इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, यू आर डूइंग मिस्टेक, ऐसे पेशेंट में वेट एंड वॉच, कुछ महीने बाद आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, देन वो कुछ बेटर हो सकता है। यस, so even biopsy or fine needle aspiration cytology is invasive procedure which is bound to injure a tissue. Whole genres are already depending hyperconstructive. We find in daily practice that malignant tumors get aggravated after biopsy. Yes, this is routine. बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि बायोप्सी के बाद वहां पे अल्सरेशन हुआ एंड ग्रोथ और हो गई ना, ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ गई। सो ये बिकॉज ऑफ बायोप्सी और एस्पिरेशन। सो साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर लायबल टू बी मोर अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग ग्रीफ। इट इज समथिंग लाइक an iron bar which undergoes stress for longer time and gradually changes in shape. The psychotic constitution people therefore mostly suffer from gradual progressed psychotic disease under stress. Very vice versa, if a person comes with gradual progressive psychotic disease like diabetes or tumors, it is more likely that this constitution has been affected by some prolonged grief, mortification, vexation, or indignation, and not from anger, fright, or sudden joy. Yes. So, syphilitic constitution people are liable to be more affected by anger, fright, and thus suffer from syphilitic sudden disease like motor neuron disease, infarct, paralysis, etc. Most of the time, it has been seen that patients suffering from cancers, when get cured of cancers, are left with diabetes, which is a good as compensatory cure as disease comes down from third depends to second depends. Yes. That is more dangerous miasm syphilitic to psychosis, and this is diabetes. It is not for dangerous for life, but cancers are more dangerous to life. Yes, so cancer से diabetes अगर होता है तो this is called compensatory cure. So tumors which are due to constructive miasm and are more stable when disappear are liable to produce diseases of psychosis accumulation like yes, जैसे कि फाइब्रॉइड गया एंड सिस्ट है, जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड गया एंड ओवेरियन सिस्ट है तो इट इज गुड साइन। Hypercholesteremia or renal stones, which is a welcome sign. Yes.
अगर ट्यूमर जाता है और रिनल स्टोन्स होते हैं तो इट इज गुड साइन. When a patient suffers from grave diseases like cancers and tumors, etc., he cannot get common disease like cold, cough, or viral fever. Thus, presentation of these common diseases is a sure shot signal that the patient is getting cured. Yes. So tumors, viruses, बहुत अच्छा सर ने यहाँ दिया है कि जो वायरल डिजीजेज होते हैं जैसे कि मिजल, चिकन पॉक्स, मम्स, है ना, स्मॉल पॉक्स, उनके लिए कि ये अगर आते हैं तो इट इज गुड और बैड. सो ट्यूमर वायरसेस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ई एब्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, HTLV virus, etc., all of which are tumor viruses, initiate psychosis or constructive defense followed by syphilis or destructive defense pathology. When a patient is being cured, when a patient is being cured, a malignancy is caused due to these. They might develop growth pathology like warts or polyps, which is welcome side. डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी जाके अगर कंस्ट्रक्टिव हो जाता है तो इट इज गुड साइन. सो चिकन पॉक्स वायरस विच आल्सो कॉजेज हर्पिस जोस्टर, रूबेला वायरस, cytomegalovirus, herpes simplex virus are similarly psychosyphilitic, yes, and get exteriorized in the form of ulcers in the mouth, cracks on the lips. The measly rash during homeopathic treatment is good sign. तो सिपिलिटिक डिस्ट्रक्टिव डिजीज के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, वायरल डिजीज होता है, तो इट इज गुड साइन. ओके, सो दिस इज कंप्लीट द hints given by Dr. Prafulla Vijayakar sir. So thank you sir, thank you very much. बहुत अच्छे सर ने hints हमें दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. Yes. So this is the last part of this book, that is the conclusion. तो हम ये मंडे को ये बुक कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. आज का बहुत अच्छा चैप्टर था. यस, सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग और सम क्वेरीज, क्वेश्चंस, so you are welcome. Yes. Yes, anyone? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट्स नहीं है तो सर सॉरी सर, वो रिंगवॉर्म अगर बहुत दिनों तक रहता है तो बैड साइन ही रहेगा, वो क्या क्या रीजन है उसका मतलब? बेसिकली इट इज अ साइकोटिक डिजीज, सो इट रिमेन्स लॉन्ग टाइम. डोंट वरी. ओके, तो ट्यूमर गया रिंगवॉर्म आया तो इतना कुछ ही नहीं है. वेट एंड वॉच. ओके. और सर ये मैनेज बिहेवियर जो है, मतलब हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है, तो इनको मतलब काफी हद तक हम लोग रिपेयर कर सकते हैं. यस. पिट्यूटरी आइडियल मतलब वो ये अगर ट्यूमर होगा वगैरह तो यस, जो उसकी वजह मेंस से रह सकते हैबिट्स हो. या फिर गर्लिश हैबिट्स होते हैं, दिस इज द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, है ना. आइडेंटिटी प्रॉब्लम है ये स्टार्टिंग के, और वो जब सिवियर हो जाते हैं देन उसके बाद की स्टेज होती है होमोसेक्सुअलिटी एंड द लेस्बियनिज्म. यस, तो उस स्टेज से रोक हम पेशेंट को रोक सकते हैं उस स्टेज में जाने से, और पेशेंट इसी स्टेज में क्योर हो सकता है. Yes. उसका कैसा मतलब ये रहेगा सर, कॉन्फ्लिक्ट कुछ रहेगा या कुछ रहेगा जैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको देना है, पूरी हिस्ट्री लेना है, उसका रिएक्शन, उसके जेनेटिक डिस्पोजिशंस आपको कंसिडर करने हैं. ओके सर, थैंक यू.
सर एक रिक्वेस्ट थी। जी कल कुछ दोनों के मैंने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करके जो अपना कॉन्फ्लिक्ट का जो ये सीरीज शुरू होने वाली है, जी। उसके पहले जो विजयकर सर के जो बुक्स है, जो मटरिया मेडिका है और सिक्वेंट इनकाउंटर है, इसको जो पहले लिए तो नहीं चलेगा क्या सर? नहीं, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये फिर ले लेंगे। ओके सर। वो उसी ग्रुप में उसे कंप्लीट कर लेंगे फिर बाद में। अच्छा सर। हम्म। थैंक हेलो, यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मैंने देखा था और मेरा भी इच्छा है। किसी ने सवाल किया था कि ये जो कन्फ्लिक्ट होगा उसके साथ क्या ड्रग बताए जाएंगे या सेंसिटिविटी या डिस्पोजिशन। किसी ने मैसेज भी किया था, हम्म व्हाट्सएप पे देखा हूँ। हम्म। उसमें ड्रग्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, ड्रग्स कोई नहीं बताएगा। जी जी। उसमें खाली इमोशंस क्या होते हैं, अटैचमेंट क्या होते हैं, मेंटल अटैचमेंट क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशन से क्या कॉन्फ्लिक्ट निकलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कौन से कंडीशन के लिए कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता आता है, या फिर उससे रिलेटेड कौन सा रूब्रिक होता है। उससे ऐसा रिलेटेड समझिए कि रूब्रिक सर। कंप्लीट रूब्रिक्स की स्टडी इसमें होगी। कैसे रूब्रिक सिलेक्ट करना, कैसे रूब्रिक अंडरस्टैंड करना। हम्म। जैसे जैसे सर, किसी को माउथ ऑफ कार्नर लेफ्ट एंड राइट एक विटलिगो आ गया। लेफ्ट एंड राइट माउथ कार्नर की विटलिगो आया, तो ये तो रिलेशन को लेके खराब है ना। अरे मतलब किसी से रिश्ता खराब हुआ है। हम्म। तो इसमें अपने को क्या रूब्रिक हो सकता है सर? क्या कंफ्लिक्ट ये हमको? यही तो पढ़ना है ना कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में, यही पढ़ना है। ये कब से शुरू हो रहा है सर? ये बहुत जल्द ये बुक कंप्लीट होगा कि वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये तो एक ही चैप्टर बचा हुआ है। जी। ये तो एक ही चैप्टर बचा हुआ है, एक दो चैप्टर। हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद उसे वो बैच स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, अच्छी चीज समझा रहे हैं। Thank you. चैट चैट। सो हेलो। यस। फॉर एग्जांपल, कैंसर के जो पेशेंट्स है सिफिलिटिक स्टेज, यस सर। वहां से यू सेड कि हम आके पॉलिप या वार्ड्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं साइकोसिस में। जी। बट व्हाई टू सेटल एट दैट स्टेज? व्हाई नॉट टू ब्रिंग इट टू द सोरा? whether it is the incomplete treatment or you require another drug at the level of the psychosis then? यस सर, ये कॉम्पेंसेटरी क्योर हो रहा है वहां पे। जैसे कि अगर पेशेंट सेवंथ लेयर का है, जहां जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, और वो फिफ्थ लेयर पे आके रुकता है, फोर्थ लेवल पे आके रुकता है, थर्ड लेवल पे आके रुकता है, या फिर फर्स्ट लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे आएगा तो वहां पे वो लेयर वाइज तो नीचे आ गया, स्किन पे आ गया, लेकिन खाली माइजम, मोर डेंजरस माइजम सिपिलिटिक तो लेस डेंजरस माइजम साइकोसिस पे आके रुक गया। और ये है कॉम्पेंसेशन। ये बॉडी ने वहां कॉम्पेंसेट कर दिया कि आप मतलब डिजीज डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कंप्लीटली गई और कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, और कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी इट इज नॉट डेंजर फॉर अबाउट लाइफ। Like, तो उस कंडीशन पे पेशेंट लाइफ लॉन्ग लाइफ अपना सरवाइव हो सकता है। but can you bring it to the sora also by giving another bolto, or by again repatriation and by taking case in detail? सर डिफिकल्ट है, बहुत बहुत Okay. डिफिकल्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हैनेमन अगर देखा तो पेशेंट सोरा में भी नहीं रहना चाहिए, दैट इज कंप्लीट क्योर। Mm-hmm. लेकिन कुछ हैनेमन नहीं बताया कि कुछ डिजीजेस में कॉम्पेंसेटरी क्योर होगा, कंप्लीट क्योर नहीं होगा। Okay. यस। जैसे कि 73 मायाजम में बताया है, ऑफेरिज्म में बताया है। Mm-hmm. Okay. यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अगर लेफ्ट लेफ्ट
लेफ्ट ब्रेस्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा तो उससे क्या रिलेशन, और लेफ्ट एक्सियल रीजन में नोड है, लेकिन डक्टल रीजन में लेफ्ट ब्रेस्ट अपर, तो उससे क्या रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट क्या निकल? लेफ्ट ब्रेस्ट में है, अपर क्वाड्रेंट में है, अपर राइट में है तो सिबलिंग्स में जाएगा, और अपर मिडल में है तो मदर से रिलेटेड जाएगा। नहीं, लेकिन अपर क्वाड्रेंट में ये सब डिटेल हम डक्टल रीजन। कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में पढ़ेंगे कि why it goes at the upper quadrant and related to mother or related to siblings or related to cousins, small brothers, big brother, ये सब रिलेशनशिप हम उसमें पढ़ेंगे। यस सर। तो फटाफट सब लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। यस सर। यस Yes, sir. Yes. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।